Hello friends, in the fifth session, we had deep dived into the concept of IoT and told you how the Internet of Things is going to revolutionize the world around us. This is the sixth session of Technology for All in English and Hindi, a technology literacy program conducted on our YouTube video channel EcoThrust and also available on our web platform. It's futureliving.com. We will clear to you the slightest doubt you had, if at all, in the last session, so that this very complex technology is completely within your grasp and you know what the Internet of Things is. Still, if you want to learn more, please subscribe and register at our website, send the email as instructed, and get the question answers, the quiz, and the transcript, and along with all the information you want. However, even if you do not register, you can ask questions in the comment box, and you can also, there's another provision of knowing more, is that you buy the book. It's futureliving.com, which is published by Routledge in September 2023 and is the basis of all these video lectures. So there are all ways possible for you to increase knowledge. You can do it free, you can do it with a subscription, you can do it by buying the book. So it is all up to you. In the fifth session, we had told you how Internet helped computers communicate with one another and how IoT helped products communicate with one another. In the sixth session, we will again go into detail and explain how it actually happens. Now, all the products which we are talking about is connected to microprocessors, the IoT devices. So these products have the IoT devices, which has the microprocessor or the semiconductor. It has the sensing devices, it has relays, it has switches, and it has various components. So it is a self-contained microcomputer within the product. So it is able to transmit data, it is able to get data, it is able to give out data, and it is there in every product, right from your refrigerator to a lawnmower to a bike, your Apple Watch, a diesel generator, a commercial aircraft, or even a perfume bottle. Today, IoT is there across the various product ranges, and you can use IoT products easily. These IoT devices are basically microprocessors, and they collect all types of data from products. They give out all types of data, and so once they are connected, the microprocessors start operating as a microcomputer. And it could be sensor data, it could be location data, it could be health data, it could be energy usage or measurement data, it could be industrial data, environment data, vehicle data, communication data, consumer data, or security data. For example, sensors measuring the temperature of your refrigerator or your room, the air conditioner, could give out signals how it should be operated. The smell, the odor, and the color of the vegetables in your fridge would give out a message on the health of the vegetables, on the life of the vegetables, and could send data to the consumer on how long the vegetables can be used. And the length and the color of grass in
your garden could give feedback to the lawnmower how much to cut and how much to leave. The location data of your bike could tell you how long you have to travel, and the heartbeat and the blood pressure and the diabetes records of you could go to the Apple Watch and give you the feedback of how you should conduct your lifestyle. The engine data from a diesel engine, generator or a commercial aircraft could give data on how those machines should function. And the odor of a room could tell you how much perfume to release, how much it has to be controlled if it's a conference room or a washroom or whatever. So this data collection is across products, and it makes all these products as mini computers, and these products have today become services because it has such a big range. This IoT device is, however, a limited storage facility with limited analytics capability. Why? Because it wants to be scalable. So what it does is it collects the data, it sends it to the cloud, and the data is stored in the cloud. Then the analytics is done by operators on the internet, and the result again is coming back through these microcomputers, which change the output data, and it gives you that what is to be done, what the consumer wants. So this is how the entire thing operates, that it is an efficient process. Those computers are not big, those computers are small and very cheap, and that is how the entire ecosystem functions. A lot of it in detail about the firmware, the hardware, and the technology part will be explained later by my friend from Bay Area, Suresh Sachdev, Intel, ex-Intel Vice President, and he will tell you more about the real technology part. But I will tell you everything about the consumer using the technology, that everything in your home, in your car, your office can be accessed and operated remotely through IoT. Gadgets like mobile phones, computers, and televisions are already connected to the internet and are already smart. Others are being connected, and today there are millions of IoT devices. In 2010, there was less than 1 billion IoT devices. By 2023, there are more than 15 billion IoT devices, and 1/3 of them are in China. The devices are growing at 16% annually globally and are completely changing the way how technology is being used. Now, over to my friend Suresh Sachdeva, who is a technology expert from the Bay Area, California. And after that, I will come back again with the Hindi part. Be a brief summary of IoT. IoT devices are all around us, used in communication, healthcare, industrial, and security applications. According to IoT Analytics' recent 23 report, there are 14.3 billion active points being used, which are expected to grow to 30 billion by 2027. Quite a staggering growth. How are these devices made? They are manufactured using a combination of components like electronic components,
sensors, and necessary software. The electronic chip components are made by some of the biggest and most advanced semiconductor companies all around the world. They are put together by large OEMs globally. Some of these companies you may have heard of: Foxconn, Pegatron, Jabil, Wistron, USI, Sanmina, and BYD Electronics. The presence of such a large amount of devices all around us, the billions of IoT objects and devices, has created hacking risks. And good cybersecurity measures will continue to be needed so that hacking is not a problem with these devices. We look forward to a world of IoT devices. We already have many of them all around us. They'll continue to grow and help us with our lives in all the areas which I talked about earlier. टेक्नोलॉजी फॉर ऑल के 5वें सेशन में आपने सुना क्या चीज़ों का इंटरनेट क्या है और कैसे वो हमारी दुनिया को बदल रहा है। इस सेशन में मतलब 6वें सेशन में हम फिर से ये सुनेंगे और गहराई में जाके इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। ये हमारा टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इन इंग्लिश एंड हिंदी का 6वां सेशन है, जो कि ये एक वीडियो सीरीज़ है हमारे यूट्यूब चैनल इको थ्रस्ट पे, और ये उपलब्ध हमारे वेबसाइट में भी है जो कि www.itsfutureliving.com है। ये जो सारे प्रस्तुति आपको रेगुलर पैकेज में फ्री में उपलब्ध किया जा रहा है, और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए आपको और क्विज़ चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और आपको उसमें वो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो कि आपको पता चलेगा कि आपने सीखा कितना है। इसके अलावा हमारा किताब जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर फ्यूचर लिविंग खरीद सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट आउटलेट के उसमें उपलब्ध है और अमेज़ॉन में भी आसानी से उपलब्ध है। तो ये तीनों प्रक्रिया आपके पास खुले हैं, पर अगर आप सिर्फ ये सुनना चाहते हैं तो सुन के भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था क्या चीज़ों का इंटरनेट क्या होता है और कैसे ये सारे चीज़ में बदलाव ला रहा है। तो इसमें एक बहुत सरल प्रक्रिया है, हम आपको फिर से वो बताते हैं। क्या इंटरनेट तब आया जबकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वार्तालाप करना शुरू किया। मतलब इंटरनेट ने डेटा एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल किया, और इससे कम्युनिकेशन शुरू हो गया दो कंप्यूटर में। अब इंटरनेट चीज़ों का तब शुरू हुआ जबकि दो चीज़ों में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। मतलब ये जो डेटा है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को जा सका। ये कैसे जाता है? ये ऐसे जाता है क्या हर एक प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर फिक्स है। उसमें क्या है? उसमें एक IoT डिवाइस है जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर को रखता है, और जो कि रिलेज, तमाम स्विचेस और तमाम सेंसर्स, जो कि आपको लाइट का सेंसर, आपको आवाज़ का सेंसिंग और तरह तरह के सेंसस का आपका विश्लेषण करता है। इसके अलावा भी दूसरे टाइप के डेटा बहुत सारे आते हैं जो कि वो रिकॉर्ड करता है। अब ये डेटा रिकॉर्ड करके वो क्या करता है? ये डेटा वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करता है जैसे कि आपका प्रोडक्ट एक लॉन मोवर हो गया, या आपका प्रोडक्ट एक रेफ्रिजरेटर हो गया, या एक एप्पल वॉच हो गया, एक डीजल जनरेटर हो गया, एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो गया, या परफ्यूम हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट को इंटरनेट
ऑफ थिंग्स से या चीज़ों का इंटरनेट से ये जोड़ लिया गया है, क्योंकि हर एक के साथ एक माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं डेटा, ऑपरेट करते हैं प्रोडक्ट्स को। और ये किस टाइप के डेटा हो सकता है? ये सेंसर डेटा हो सकता है, ये लोकेशन डेटा हो सकता है, ये हेल्थ डेटा हो सकता है, ये एनर्जी यूजेज डेटा हो सकता है, मेजरमेंट डेटा हो सकता है, ये इंडस्ट्रियल डेटा हो सकता है, ये एनवायरनमेंट डेटा हो सकता है, व्हीकल डेटा हो सकता है, कम्युनिकेशन डेटा हो सकता है, और कंज्यूमर सिक्योरिटी डेटा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हर टाइप का डेटा ये कलेक्ट करता है और उसके बाद ये क्या करता है? ये इसको क्लाउड में भेज देता है। क्लाउड में ये डेटा सारे स्टोर होते हैं और क्लाउड में अप्रोच करके एनालिटिक्स वाले जो इंजीनियर्स हैं वो क्लाउड से उसको डाउनलोड करके उसकी एनालिटिक्स करते हैं। फिर वो विश्लेषण जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को भेजा जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर को भेजा जाता है, सेल्स टीम्स को भेजा जाता है। फिर वो उसमें जो चेंजेस करते हैं, अगर सप्लाई कहीं पे कम है तो उसको पूर्ण करते हैं, अगर सप्लाई का टाइप पैटर्न चेंज करना है तो उसको पूर्ण करते हैं, अगर नया चीज़ आ रहा है उसको अंदर सप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ उठा के ये प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके और जो यूज़र और मैन्युफैक्चरर से वार्तालाप करके ये प्रोडक्ट्स अपने आप में एक सर्विस बन गया है। ये हमने देखा है पिछले 10 साल के अंदर ये चेंज, और ये चेंज इतना ज़बरदस्त चेंज है क्या आप सोच भी नहीं सकते। क्या 2010 में सिर्फ 1 बिलियन IoT प्रोडक्ट्स थे, 1 बिलियन से कम थे IoT प्रोडक्ट्स, और आज के दिन में 15 बिलियन IoT प्रोडक्ट्स थे। ये 16% प्रति साल बढ़ रहा है और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये कोई भी इंडस्ट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और ये सारे चीज़ों में आज के दिन में ज़रूरत है, सारे चीज़ों में उपलब्ध है। और ये एक सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर या सेंसर या डेटा कलेक्टर नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, एक मॉनिटर है और ये पूरा कंट्रोलर है ये IoT डिवाइस। और ये IoT डिवाइस के साथ बस 2 चीज़ और होना चाहिए। एक तो IP एड्रेस होना चाहिए जो कि वो अपने आप ऑपरेट कर सके, उसका अपना IP एड्रेस होना चाहिए, और दूसरा अपना एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो कि उसका बैटरी पैक है। ये सारी चीज़ें जब हो जाता है तो एक IoT डिवाइस सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है और वो कुछ भी डेटा को मॉनिटर कर सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये क्यों होता है इस टाइप से? ये इसलिए होता है कि हम कम कीमत में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो हमारे यूज़र है, जो हमारे टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स है, इसको टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत में ये यूज़र को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। और इसके बारे में और थोड़ा सुनना है तो आप हमारे मित्र सुरेश सचदेव से सुनिए, जो कि एक सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और पहले ये इंटेल के वाइस प्रेसिडेंट थे और अभी ये वहाँ पे एक एडवाइजरी फर्म चलाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ बोला है ये कैसे सारा चीज़ होता है इसके बारे में। आज तक के लिए हम यहाँ ही ख़त्म करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। हम सोचते हैं कि आपने सारा चीज़ आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। आज अब हम चलते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।